अचानक से जो उनकी सबमरीन है उसने अपनी इलेक्ट्रिक गन को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से डर कर सर गहरे से गहरा कितना पानी देखा यार? सर गहरे से गहरा कितना पानी दे देगा इसका है जरा से अंदर नहीं। हाँ हमारे एक जगह चोपड़ा है और वहाँ पे एक बावड़ी है और वो बावड़ी कहते हैं बहुत गहरी है और ये सब मैं सब देखी बात है कि वहाँ पे जाने कितने लोग और बच्चे वहाँ डूब कर ऐसे मेरे अभी तक उनका पता नहीं है। सर सबसे गहरा पानी तो हमने हमारा वहाँ बांध बना हुआ है, डैम कहते हैं जिसे हम, बहुत लबालब भरा रहता। मेरे हिसाब से सबसे ऊंडा वही है। सर आपके साथ ही मैं गया हूँ बम्बई की तरफ, वहाँ समंदर देखा था मैंने। तो वैसे तो गहराई ऊपर से देख नहीं सकती, बाकी लोगों ने मुझे सुना बहुत गहरा होता है समंदर। सर आपने कभी मारियाना ट्रेंच का नाम सुना है? मारियाना ट्रेंच सर इसका मतलब क्या होगा? मारियाना ट्रेंच भगवान जाने क्या चीज़ होगी सर, मैंने तो नहीं सुना। ये सर पहली बार नाम सुन रहा हूँ आप सर। सर मारियाना ट्रेंच दरअसल एक जगह है जी। आपको पता होगा कि समंदर जो है वो 70% है दुनिया में, बिल्कुल है, 30% धरती है। बिल्कुल। तो समंदर का सबसे गहरा जो हिस्सा है हाँ वो मारियाना ट्रेंच। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं जी वो मारियाना ट्रेंच की ही वीडियो है। अच्छा अच्छा। कहा जाता है कि उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर माउंट एवरेस्ट हाँ जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया में, हाँ उसको भी अगर उल्टा करके डाल दिया जाए तब भी उसकी गहराई नहीं नाप सकती। इतनी गहराई यानी अब उसके बड़ा पहाड़ है उसको भी उल्टा करके डालेंगे उसके बाद उसकी गहराई ऐसा फिर तो ये कमाल की चीज़ें सब जरूर देखना चाहेंगे सर कि जब इतना ऊंचा पहाड़ है लेकिन वो भी कहीं नहीं ले लगा तो उसकी गहराई कितनी होना चाहिए? सर हमने जहाँ तक के ज्ञान की बात है तो हम अंतरिक्ष की चीज़ों के बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने, और समंदर के बहुत चीज़ें कम देखने को मिलती है। बहुत अच्छी जानकारी हासिल होगी इससे भी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के। इतने गहरी जगह मत सोच के दिमाग वो हो रहा है कि हिमालय पहाड़ जैसी चीज़ उसमें, उसके बाद वो जगह बच जाएगी नीचे। कितनी गहरी चीज़ होगी वो, दिखाइए सर मुझे। Who can touch the bottom? Such a phrase can often be heard among our children frolicking on the shores of rivers or playing on the coasts of our seas and oceans. However, childhood passes, and as certain of us grow into adulthood, we aim for more ambitious goals. Some to conquer the highest peaks of the globe, while others seek to plumb the farthest depths, to literally touch the bottom of our Earth's waters, in places where neither human nor other living beings can exist, except of course for some unassuming bacteria. Such an attraction is the abyss of Challenger, the deepest point of the Mariana Trench, which is at a depth of 10,994 meters, or almost 6,000 feet below sea level. The first daredevils who dared to dive to these dangerous depths were the Swiss engineer Jacques Piccard and the U.S. Navy's Lieutenant Don Welch. On January 23, 1960, in the Bathyscaphe Trieste, these fearless men descended to the very bottom of the world ocean. The researchers were absolutely confident that they would see no life at a depth of more than 10 kilometers. And really, what kind of living creature could withstand such extraordinary pressures, exceeding our own everyday atmospheric pressure by 1,072 times? Any organism we can imagine would be squashed, crushed, ripped and smashed into smithereens under such a pressure created by the billions of tons of water. However, during the expedition, the scientists began to reassess their disbelief. After having spent almost 5 hours continuously diving, Jacques Piccard and Don Welch spent just 20 minutes at the bottom. It's understandable that they were overcome with feelings of a wild, primitive fear, which made them pray for the help of their colleagues on the surface. What could frighten such experienced researchers who have lived through so many real dangers in their lives? The first thing that took the nerves of these men in the Bathyscaphe were strange, eerie sounds, reminiscent of the gnashing and grinding of metal on metal. Was it possible that someone else was diving at the same time? But the conquerors of the depths had no wish to make guesses. To dispel doubts, they directed their gaze to the monitor for their echo sounder, a kind of sonar device. The sight caused even more horror. On the device, there were gigantic shadows, reminiscent of some mythical three-headed creatures, something like dragons.
However, this could be attributed to the scientists' fatigue as they were under such extreme conditions. It could easily be just their imagination. However, once back on the surface, something made the hearts of these amazing aquanauts pop out of their chests from fear. The huge steel bathyscaphe with its 13-centimeter or 5-inch thick walls was crumpled like a ping pong ball, and a heavy-duty 20-centimeter or 8-inch diameter cable was cut in half. Just imagine what kind of a creature could be capable of rendering such damage. So what caused this bizarre incident? And why was such a strange occurrence kept from the public for 36 years? Only later, in 1996, did the New York Times finally publish a story about the shocking event. Maybe the scientists and the U.S. Navy have been hiding something important from us all of these years. Or did a serious, authoritative publication suddenly decide to hype up a fictitious story to sell newspapers? It hardly seems possible. And believe it or not, there's another confirmation of the presence of a mysterious creature in the deepest part of our world ocean. German researchers lowered the bathyscaphe hayfish to the bottom of the Mariana Trench on a mission to observe the inhabitants of the Challenger abyss. What they saw shocked the entire team. On their monitors, scientists saw a gargantuan, monstrous lizard creature. Frightened, they turned on their so-called electric gun, which electrifies the area outside the craft. Thankfully, this made the frightening monster swim away. But we must ask, who or what is this mysterious inhabitant of the sea depths, and what kind of a danger is it to us? While you're writing your assumptions in the comments, let's go 48 years earlier, long before the first expedition. In 1918, Australian lobster catchers claimed that they had repeatedly seen a giant fish-like creature more than 30 meters or 100 feet long. According to all of their descriptions, the monster resembled a shark weighing approximately 100 tons, equipped with huge 2-meter or 6.5-foot jaws, and with 10-centimeter or 4-inch long teeth. This could be nothing other than megalodon, a giant shark thought to be extinct, which inhabited the waters of the world ocean more than 2 million years ago. This monster is larger than any marine creature that has ever existed. So, is a miracle animal just hiding in the watery depths and just biding its time? Why not? After all, during the entire study of the animal kingdom of the Mariana Trench, numerous oddities have been revealed. Just look at the local amoebas, for example, the simplest single-celled animals. Many of us, often from grammar school lessons in biology, have learned that these minuscule representatives of the wild kingdom can be seen only with the help of a microscope. But not at the deepest point of our world ocean. Amoeba here can reach an amazing 10 centimeters or 4 inches in size, the same as the size of megalodon's tooth. Not to mention that there are 1.5 meter or 5-foot long worms and bizarre mutant octopuses. It seems that the deeper we manage to take pictures of living creatures on our Earth, the more bizarre the forms they exhibit. In addition, the bottom of the Mariana Trench contains another inexplicable mystery. Mammoth stone bridges discovered there that are as long as 69 kilometers and look as if they were designed by man. Is this proof that Atlantis, which, according to myths, disappeared beneath the water, actually existed? Alas, no. The real explanation is more than trivial. It's all about the collision of the Pacific and Philippine tectonic plates. As a result, researchers of the sea depths receive great pleasure observing this amazing phenomenon. But this is not the only thing the giant crevice in the ocean bottom can impress us with. If you previously doubted whether there's life at the bottom of the Mariana Trench, it is now known that the Challenger abyss is filled with life itself, or rather, what remains of it. The fact is that under normal conditions, the seabed is not that interesting. But in the case of the Challenger Deep, it is covered with a massive layer of corpses as the remains of once living organisms roll down to the deepest place on Earth. On the way to the abyss, dead fish and mollusks pass perhaps what is the most interesting feature of the deep sea landscape, an analog of which can be found only on one of our satellites of Jupiter. It's a lake of pure molten sulfur.
heated by the underwater volcano called Daikoku. Yes, this bloody hollow is a true hell on Earth. In describing the 9 circles of hell, Dante might have been representing this place. On the way to the bottom, you first pass the giant reptiles and single-celled creatures. Then one finds oneself in the sulfur fires of Gehenna. Then finally one comes to rest and begins to decompose in a massive layer of dead sea life. As to the existence of giant reptilian monsters or megalodons, James Cameron does not support this point of view. And his opinion is quite influential, as the director who gave the wonderful film Titanic to the women of the world and Terminator to the men. He is the third and so far latest researcher to reach the bottom of the Mariana Trench. In the Challenger Deep, James spent much more time than his predecessors, almost 3 hours. Unfortunately, he did not find any super creatures during this time, but he did manage to film जबकि तो फिल्म का डायरेक्टर है, देखा जाए तो इसका काम ही नहीं कुछ films with enough left over to write in Twitter. So if Cameron disappointed with the absence of monsters found in the Mariana Trench, and your assumptions about their existence are already written in the comments, here is more food for thought. Why does one need to explore this place that has been visited by only 3 people, in addition to several deep-sea diving vessels? In fact, studying this mysterious place has saved everyone from bathing in radioactive water. The truth is, earlier last century, human beings planned to bury nuclear waste at the very bottom of the Mariana Trench, believing that the water there was in a state of eternal stagnation, and so all the nuclear waste produced on Earth could be stored there for millions of years. However, studies have shown that even at the bottom of the trench, the currents are so strong that every corner of the world ocean would have been contaminated with uranium, plutonium, and other radioactive elements if such a plan had been put into effect. Interestingly, when scientists were measuring underwater currents in the Challenger Deep, they found an unremarkably average and most common supermarket plastic bag. I would like to believe that it was lost by an inhabitant of Atlantis on his way to his local supermarket. But in fact, this once again proves how polluted the world ocean has become, and that every abandoned piece of garbage tossed in the water can find its way to almost any point on the globe. Perhaps then it wasn't bizarre monsters, but the scale of ocean pollution that actually frightened all the previous expeditions. सर वो जो 3 बंदे अंदर गए हैं 10,000 11,000 मीटर की गहराई में जा रही है सामने वाला, उनके भले वो वहम हो, झूठ बोले, आंख लग गई हो, उनकी बात मानना पड़ेगी, वरना वो बोल देंगे भाई तू जाके देख ले, क्योंकि कलेजे वाले जा सकता अंदर, जिसको मौत प्यारी नहीं है वो जा सकता अंदर, पर वो निर्देश हिसाब से रिया नहीं गया, वो पहुँच गया अंदर, उन्हें कुछ और मामला दिखा, उन्होंने जो है कि फोटो वोटो खींचे। और इसके अलावा एक बात की और रहना नहीं हुई कि जो हम इंसान का जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो तक जो है कि समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कितना प्रदूषित कर दिया हमने उसको, समुद्र को। अब जो गहराई देखिए गहराई जो बहुत ज़्यादा है, वो कहना कि चिक्का हजारों टन पानी के ऊपर वो दबाव तो अभी अब इतने घेरे में जाएंगे तो हम पानी का वजन तो मुझे नहीं होता है, तो वो दबाव तो उनको देना लाजमी है। ये वीडियो देख के तो ऐसा पता चला कि हमारे समंदर में इतनी गहराई भी है, मैं तो मालूम नहीं था। और पता चला कि 3 आदमी का आज तक दुनिया में से कोई गई नहीं, वो बता रहा कि गहराई में इतने अजीबोगरीब जानवर, दानव भी बता रहा हूँ, हो भी सकते हैं उतने खतरनाक वो भी। सर इसमें सुना मैंने कि परमाणु का जो कचरा है उसको जो है कि दफनाने की बात चल रही है, लेकिन सर परमाणु बम सुन के घबराहट होती है कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और उसका कचरा उसमें ले जा रहा है, और उससे शोध पता लगा कि अगर इसका कचरा दफन कर दिया उसके अंदर गहराई में तो पूरा समुद्र जो है कि प्रदूषित हो जाएगा, जानवर मर सकते हैं। मैं क्या रहने दे भाई दादा, जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ छेड़खानी मत करो कुदरत के साथ। अब जैसे वो कह रहे हैं कि सब इसमें कोई जाना वाना तो नहीं है, लेकिन सब पानी जैसी चीज़ हो उसमें गहराई हो और छुपने की जैसे उनको जब जगह में तो होते रहेंगे, वो हमारा भी माना जाता है ज़्यादा पानी में रहते हैं क्या वो ये भी सही, बाकी वो चीज़ को मान नहीं रहा। सर वो जैसा कि बता रहे हैं कि वो परमाणु का कचरा डालना चाहते हैं, पर वो तो कुदरती चीज़ है, वो कुदरत के साथ खेल खिलाड़ करोगे तो भी खतरनाक साबित होना ही, कोई कुदरत की चीज़ रहती है नहीं, उसके बाद कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। सर ये लोग तो जो है कि फुल तैयारी के साथ जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं आसानी से, कभी इसी जगह पे कुछ हादसा हो जाए, जहाज पलट जाए और कोई शख्स नीचे गया तो फंस जाए तो वो बिना तैयारी के तो रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा सर वो।
कहाँ उसका कंकाल भी पता नहीं चलेगा कहाँ गया, मछलियाँ खा जाएंगी उसको। कुल मिला के मेरे को आज सबसे अच्छी जानकारी तो ये मिली कि लोगों के मुँह से सुना तो था कि समुद्र की जो गहराई कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन अब सब ये देखा कि तो 3 आदमी जा चुके हैं, वो पूरी नाप के आ चुके हैं। और कुल मिला के बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो आज देखने को मिली। कभी कोई आए ऐसा मौका या कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको बता भी सकता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया लगी। अरे जो इंसान जो रहता है नहीं, जो किस चीज़ के पीछे पड़ जाता है नहीं, वो करके ही रहता है, वहाँ तक के पहुँच ही पाता है वो। अब लोग बाग चांद करते थे, चांद पे जाके ही माने लोग बाग। अगर ऐसे ही मरियाना ट्रेंच नाम बोलता है आपने, वहाँ के पीछे पड़ेगा लोग जगह के पीछे, तो वहाँ पे भी जाके मानेंगे। आम बात हो रही सबके लिए।